Most students think scoring in math is all just about solving more questions. But trust me, it's not just about that. Let me sit down first. Hi, I'm Jia and I scored 96 out of 100 in my math board exams. But ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी. I scored just 36 in my first periodic exam. मैंने 36 की जर्नी 96 तक कैसे पहुंचाई इसके बारे में जानते हैं. Let's get back to the story. Tip number 1. If you are short in time and if you are someone like me who hasn't covered the syllabus yet, then don't make this mistake to solve NCRT, exemplar, and reference books. Instead, solve 5 to 10 years of PYQs. If you do this, you will cover the whole NCRT, the exemplar, and all the reference books. Because all the questions of the reference books are the PYQs. So, in the end, you are covering all of them. Tip number 2. While solving questions, if you find any new or repeated or a questions you think very important and you cannot solve this in one go, then make a simple notebook. Just a simple notebook and write down all the PYQs, all the important questions in that. That notebook will become your math lifesaver before board exams. I'm truly saying that make it now. Go, just make it now first. Tip number 3. Most students solve NCRT the wrong way. They think doing NCRT once or twice and you are done, but that's completely wrong. Let me tell you the right way. First, when your class, when the teacher is teaching, listen to them carefully and do all the questions they are telling you to do. In the revision, while you are revising all the questions, do them carefully. बाय द वे ये पटाखों की आवाज से कोई दिवाली आ रही है. हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली. So what you have to do is while you are revising the questions, you have to take a pencil with you and mark all the important questions while you are revising. And when the exams comes, when one day before the exam, you can just revise all those important questions. This way you are not missing on the important questions, the questions that are repeated many times. You are not missing them, but at the same time you are not doing whole NCRT. You are not wasting your time. Tip number 4. You have to focus more on quality than quantity. फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं सिर्फ 5 चैप्टर्स और आपने सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको जो 2 बचे हुए चैप्टर हैं उसको भी कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी रश में. तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है. Instead, make those 3 chapters strong rather than half doing all the 5 chapters. This way, you don't have to start from the very scratch after the exams. Tip number 5. What to do when you are stuck? This is the biggest problem among students. आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन हो नहीं रहा है, आपके दिमाग में पूरा फटीग बन चुका है, तो उस टाइम क्या करना है मैं बताती हूँ. तो आपको करना है सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है. ब्रेक मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हो तो आपको जो ब्रेन है, आपको जो माइंड है, वो बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होता है. जब आपके दिमाग से इतना फटीग है वो निकलता जाएगा, आप थोड़ा आपका जो ब्रेन है वो और काम होगा, तो आप और इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे. और आप ये खुद देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो बात को कि आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक ब्रेक लेकर फिर वो ट्राई करो फिर से, तो आपको वो 1-2 बार में क्वेश्चन बन जाएगा. दिस हैपन्स. ये थी सारी टिप्स और ट्रिक्स. एंड इफ यू वांट अ वीडियो ऑन प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग और हाउ टू मैनेज टाइम, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. And bye bye.